हाँ जी, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to learn about Panopticism by Michel Foucault. Subject is Critical Theory 1 of MA English semester 3rd. So first of all we will write about writer. Michel Foucault was born on 15th of October 1926 and was died on 25th of June 1984. He was French philosopher, social theorist, historian of ideas, philologist, and literary critic. He was associated with structuralist and post-structuralist movements and was known for his critical analysis of social institutions and power structures. Some of his important works include: first is Madness and Civilization, second is The Birth of Clinic, third is Discipline and Punish, and last one is The History of Sexuality. Okay, Hanji, the concept of panopticism has been taken from his book Discipline and Punish, published in the year 1975. In Panopticism, Michel Foucault talks about a unique way that modern society controls people not through direct force but by making people feel they are always being watched. His ideas are based on architectural design called Panopticon, a type of prison, which means jail. Okay, imagined by philosopher Jeremy Bentham. इस कंसेप्ट को ओरिजिनली दिया था 18th सेंचुरी के फिलोसोफर ने जिनका नेम था जेरेमी बैंथम. उन्होंने ये समझाने के लिए इस कंसेप्ट की बात की थी कि इनविजिबल डर कैसे काम करता है. So, in this prison, one guard in a central tower could potentially watch all the prisoners, but they wouldn't know exactly when they were being watched. Because of this uncertainty, prisoners would behave as though they were always under surveillance. सो सपोज करो एक जेल है जो सर्कल में बनी हुई है. जेल में बहुत सारी रूम्स है जिनमें क्रिमिनल्स कैद हैं. उन रूम्स में लाइट अवेलेबल है एंड रूम्स के सेंटर में एक टावर बना हुआ है जिसमें एक पर्सन उन सभी क्रिमिनल्स कैदियों पर नज़र रखता है विद द हेल्प ऑफ लाइट जो रूम के इनसाइड तक जाती है. सारे कैदी इस बात को जानते हैं कि वो आदमी जो टावर में है वो एक टाइम पर सारे कैदियों पर नज़र नहीं रख सकता. वो घूमेगा, चारों तरफ देखेगा एक एक कैदी को, लेकिन फिर भी कोई भी कैदी भागने की कोशिश नहीं करता. वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करते इस इनविजिबल डर से, बिकॉज उनके मन में वो डर है कि टावर में खड़ा आदमी उन्हें देख रहा है. ओके, सो इस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर को बनाया था जेरेमी बैंथम ने. आफ्टर दैट 20th सेंचुरी में हमारे मिशेल फूको, उनकी नज़र पड़ती है इस कंसेप्ट पर एंड उन्होंने इसे क्लोजली स्टडी किया. उन्होंने बताया कि ये कंसेप्ट जस्ट जेल पर लागू नहीं होता बट हमारी सोशल लाइफ में भी यही कंसेप्ट लागू होता है. ये इनविजिबल डर आज सोसाइटी में हर जगह प्रेजेंट है. So Michel Foucault, a French intellectual and critic, expanded the idea of panopticon into symbol of social control that extends into everyday life for all citizens, not just those in the prison system. Foucault says this concept applies to schools, hospitals, workplaces, and other institutions where people might feel watched, judged, and evaluated. Over time, people in these settings learn to follow rules and norms on their own, acting the way society wants them to act. Okay, and Foucault also compared this disciplinary observation to a medieval village under quarantine. In order to stamp out the plague, officials must strictly separate everyone and patrol the streets to ensure villagers don't leave their homes and become sick. If villagers are caught inside, the punishment is death. So, जैसे आप पैंडमिक का एग्जाम्पल लो, यहाँ पर मिशेल फूको ने भी पैंडमिक का एग्जाम्पल लिया है. जैसे कोरोना के टाइम पर घर के बाहर से पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही थी. दैट्स वाई लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर के बाहर जाकर घूम सके, बिकॉज उनके मन में डर था कि पुलिस की गाड़ी आ जाएगी. दिस इज़ इनविजिबल डर एंड ऐसा टावर है जो सोशल लाइफ को भी कंट्रोल कर रहा है. ओके, एंड हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं. सो दैट एग्जाम्पल इज़ दैट इमेजिन करो कि हम ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करते हैं.
जब ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पर प्रेजेंट होता है ना? एंड द मोमेंट वी सी द ट्रैफिक गाय इज नॉट देयर, वी स्टार्ट ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स. नाउ इमेजिन what happen if every traffic light area they put CCTV cameras and they say हम इन CCTV कैमरास के थ्रू एक सेंट्रल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं इफ़ पीपल आर ब्रेकिंग द रूल्स और नॉट, रिगार्डलेस ऑफ चाहे कोई कंट्रोल रूम में बैठा हो या फिर ना. क्या होगा? पीपल विल नाउ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स बिकॉज दे स्केर्ड कि क्या पता मुझे ट्रैफिक पुलिस थ्रू CCTV कैमरा देख रहे हो. ओके, सो उनके मन में एक इनविजिबल डर पैदा हो जाता है. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. हाँ जी, सो नेक्स्ट इज डिटेल समरी ऑफ दिस कंसेप्ट पेनॉप्टिसिज्म. सो आई हैव यूज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बनाए हैं. सो आई होप दीज नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू. So Foucault's emphasized the element of reform through effective control, to punish less perhaps, but certainly to punish better. So this is line from the text of the essay. So you have to mention this line as it is, okay, to make our answer effective. So Panopticism का जो concept है वो based है इस चीज़ पर कि punish कम करना है but in a better way. Michel Foucault's idea of power is different from the traditional ideas of power. He sees power not as something that one person or group owns, but as a something that exists in a relationship between people, groups, and institutions. Power is everywhere in the society and it isn't controlled by any one person or group. Its main medium of control is surveillance. Power works mainly through the feeling that people are being watched, which influence their behavior. So, when you are under the impression that somebody is watching you every time, then आपको फीलिंग क्या आती है कि आप अंडर सर्विलेंस है. आपका कोई भी एक्ट है जो वो पार से या फिर कंट्रोल से बाहर नहीं है. सो ऑटोमेटिकली जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल में आ जाएगी. ओके. Next is Foucault's explained this kind of power by using Bentham's Panopticon, a prison where prisoners are always visible to God, to show how the feelings of being watched change behavior. So ये लाइन वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही है जो मैंने एग्जाम्पल में बताई थी आपको. ओके. हाँ जी, सो बिफोर मूविंग फर्दर आप ऐसा करो, गूगल पर जाओ और वहाँ पर सर्च करो द पेनॉप्टिक डिवाइस एंड वहाँ पर आप इमेज देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट. ओके, सो द पेनॉप्टिक डिवाइस इज अ रिंग शेप बिल्डिंग विद अ वॉच टावर एट इट्स सेंटर. Each floor of ring-shaped building is divided into cells of equal size. Each contain two windows through which light can penetrate, giving perfect visibility to whomever lies in the watchtower. सो छोटे छोटे सेल्स एंड रूम्स बने होंगे आसपास एंड इन सेंटर वॉच टावर बना होगा एंड इन सेल्स और रूम्स में लाइट जा रही है एंड इतनी लाइट जा रही है कि जो वॉच टावर में बैठा है उसे सब कुछ दिखाई देता है जो सेल्स में होता है. Shutter prevent those in cells from knowing whether the watchtower is occupied. In short, the inmate is seen, but he does not see. बट उनकी बनावट इस तरह की है कि जो सेल्स में लोग बैठे हैं, जो क्रिमिनल्स बैठे हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि वाच टावर में कोई बैठा है या फिर नहीं. इसका मतलब अगर वाच टावर में कोई नहीं भी है, इवन देन जो सेल्स में बैठे प्रिजनर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन्हें लगेगा कि समबडी इज़ वॉचिंग दैम. ओके, सो जो अंदर है सेल्स के वो दिख रहा है लेकिन वो बाहर नहीं देख सकता. Power is visible because of the omnipresence of the watchtower, because it is impossible for the inmate to know when he is being watched. Power function automatically and constantly present through the piercing gaze of the watchtower. So I hope the idea of power is clear to you. हाँ जी, so next lines are very very simple. The Panopticon is a design where a small group of people can constantly watch over many others. It is good example of how Foucault see power because it shows that power is everywhere and always visible.
The central tower or watchtower is very important in this system. It represents how power works. The tower sees everything and make people feel like they are always being watched even if no one is actually watching them at all the time. This feeling is enough to make people behave as if they are under constant observation. This idea explains how power can work without using force. अगर उन्हें पता होगा कि हर टाइम उन्हें कोई देख रहा है, देन वो अपने प्रिजनर्स खुद बन जाएंगे. अगर कोई एक्टिविटी करने की वो सोच भी रहे हैं, लाइक कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, देन वो रुक जाएंगे बिकॉज उन्हें पता होगा कि उन्हें कोई देख रहा है. ओके. हाँ जी, सो नेक्स्ट इज फूको's आइडिया ऑफ पावर नॉलेज. So the Panopticon is closely connected to the Foucault's idea of power knowledge. The idea doesn't mean that power and knowledge are the same things. Instead, it means that power creates knowledge and knowledge also strengthens power. So this is very important line. So Panopticon फूको के पावर नॉलेज के विचार से जुड़ा है. इट डजेंट मीन दैट पावर एंड नॉलेज एक ही चीज़ है. इसका मतलब है कि पावर से नॉलेज पैदा होती है एंड नॉलेज से पावर बढ़ती है. ओके, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर. In the case of Panopticon, this idea can be seen in how the watchtower works. The people being watched know that tower might be observing them. This knowledge of being observed, watched, give the power to tower because it makes people act as a certain way even if no one is actually watching at that moment. So, the knowledge, which means awareness of being watched, leads to power, which is control over people's behavior. And this process explains how power and knowledge are connected in the Panopticon. Okay, so knowledge यहाँ पर वो जानकारी है कि उन्हें देखा जा सकता है एंड पावर लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना है. ओके, बिकॉज उन्हें डर होता है कि कोई उन्हें देख रहा है. सो दिस प्रोसेस एक्सप्लेन हाउ पार्ट एंड नॉलेज कनेक्टेड टू द पेनॉप्टिकन. आई होप यू अंडरस्टैंड. And the second part of Foucault's idea of power knowledge suggests that power doesn't just control, it also creates knowledge. Okay, this knowledge divides people into categories such as normal and abnormal using labels like healthy versus sick or sane versus insane. Foucault's main point is that while power leads to new knowledge, it also uses that knowledge to label and control people. This labeling is how disciplinary power works. It classifies people and applies rules to them based on these labels. The Panopticon reflects this concept of biopower. Biopower is ability of power to watch over, categorize, and control all areas of the life. The Panopticon works as a tool for both individualizing, which means focusing on each person, and totalizing, which means watching everyone. Through biopower, the Panopticon doesn't just punish people, it corrects them, changes them, and shape their behavior. Okay, next is classification is a sanction. If you are well classified, there is reward, but if you are not well classified, there is punishment. So आप इन लाइन्स को जरूर मेंशन करना एग्जाम में. ओके, हाईलाइट कर कर, बिकॉज it is a lines from the text. Neve Gordon suggests that cubicles in workplaces are better examples of Foucault's idea of power than Panopticon. So कुछ critics का कहना है कि Panopticon से ज़्यादा cubicles उनके idea of power को represent कर रहा है. Foucault ने Panopticon को as an example लिया था अपनी ideas of power को समझाने के लिए. Okay. Why cubicles? Cubicles don't have doors and the walls are not fully enclosed. Workers sit with their backs to the entrance so they don't know who might be passing by or watching them. This uncertainty makes workers behave as if they're always being watched even if no one is watching. This is similar to Foucault's idea that people self-discipline because they feel observed.
The problem with Panopticon. So, in the Panopticon, the watchtower seems like the place where all the power comes from, as it controls the inmate. But Foucault's idea of power is different. He believes that power is separate everywhere, not just in one place like watchtower. A new way to see Panopticon. Instead of thinking the watchtower hold all the power, think of it as a symbol of how power is organized. The real power is in how the inmates or worker in cubicles control themselves because they feel watched. The watchtower just help to create the feeling of being watched, but the inmates are one who adjust their behavior and make power work. Next is conclusion. So, the panopticon created by Bentham is a good example to help understand Foucault's idea of power, but it doesn't show everything about it. There are two main reasons. The first problem is about Foucault's idea of power knowledge. The panopticon only shows part of this idea. It shows how people in power use knowledge to control others. But Foucault's idea is bigger than that. He believed that power not only use knowledge but it also creates knowledge. Okay, and second problem is that Panopticon doesn't show all the ways power works in society. Foucault's focus too much on power being used from the top like a guard watching from above. But power also works in other ways, not just from the top. To understand powerfully, we need to think about all the different ways it works, not just one. Okay, so I hope you understand each and everything. जेकर मेरे को कोई गलती होगी होवे देन प्लीज़ मैनू माफ़ करियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.